Good morning, student. Now, it's the same chapter, probability. And if A and B are two events independent, then condition P of A intersection B equals to P of A into P of B. Two events are independent, then condition P of A intersection B equals to P of A into P of B. Yesterday I have discussed first to 6 question. Now question number 7. If P of A is given, P of B is given, any probability of event A and probability of event B are given. Probability of event A is 1 by 2. Probability of A union B is 3 by 5. And probability of B is P. And find the value of P if they are mutually exclusive, and second is independent. Now look here, student. First thing is a mutually exclusive. Two events are mutually exclusive. You know, student, mutually exclusive event, that means happening of one exclude the happening of other. That means P of A intersection B is 0. But now the P of A union B. Now first part, if A and B are mutually exclusive, then उस condition में formula of P of A union B equals to P of A plus P of B. Mutually exclusive, that means P of A intersection B is 0. So P of A union B is 3 by 5, P of A is a 1 by 2, P of B is a P. Then is a P equals to 3 by 5 minus 1 by 2. That is a P equals to 10 LCM, 5 2s are 3 2s are 6, 2 5s are, then 6 minus 1 by 10 is, this is answer. But now the second part, if A and B are independent, right? इसका मतलब ये होगा कि mutually exclusive है तब, that is A and B are not independent. So then independent, so independent formula P of A intersection B equals to P of A into P of B, where the value of P of A is given 1 by 2. P of B is given P. But P of A intersection B is not given, right? Then उस condition में P of A intersection B का formula P of A plus P of B, P of A plus P of B, P of A union B, right, equal minus P of A union B, right? So now independent, then P of A is a 1 by 2, P of B is a P minus P of A union B, is the value of P of A union B is 3 by 5, right? So equals to 1 by 2 into P. Then 1 by 2 minus 3 by 5, P minus P by 2 is, that is a P by 2, and 1 by 2 minus 1 by 2 plus 3 by 5, that is the again P by 2. Now is the 10 LCM, 2 5s are, 5 2s are, then 3 2s are 6, 6 minus 5, this is a 1 by 10, then P equals to 1 by 5, this is answer. So now look here, student, that is the independent, that means the condition P of A intersection B equals to P of A into P of B. Independent A and B are, but P of A is given, P of B A intersection B is not given. तो हमने उस कंडीशन में कि जब इंडिपेंडेंट है तो हमने उस कंडीशन में फॉर्मूला यूज किया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, करेक्ट. सो इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट. सो नाउ इज अ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8, P of A is given 0.3, P of B is given P of B is given 0.4, and now find P of A intersection B. And according to question, now is a given A and B are independent, that is P of A into P of B. That means 0.3 into 0.4, that is a 0.12. This is answer. So now this is the first part. Second part, now P of A union B. And you know, student, P of A union B, P of A is plus P of B independent, that means not mutually. P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A is given 0.3, P of B is given 0.4, or P of A intersection B 0.12, right? Solve कर लेना आप. Question number 3rd part, P of A by B. You know, student, P of A by B, that is the formula P of A by B. That is a P of A intersection B conditional probability upon P of B. P
P of A intersection B is 0.12, right? And P of B is 0.4. Point cancel 10, point cancel, that is 100, 0 to 0 cancel, 4 3s are 12, that is 3 by 10, 0.3 is answer. Now, question number 9. If A and B are two events, if A and B are two events and P of A is given, P of B is given, P of A is a 1 by 4, P of B is a 1 by 2 and P of A intersection B is 1 by 8, right? Find the not P of not A and not B. Now look at student, this question is again very simple question. कि find the probability, not की probability that is denoted by A bar या A dash. This is notation of not, right? Getting not की probability and this is, you know, student in our 11th class, 10th class, P of A bar equals to 1 minus P of A. But now this question, question number 9, P of A is given 1 by 4. P of B is given 1 by 2. P of A intersection B is given 1 by 8. Find the probability of not A and not B. That means is a not A, that is A bar. A and D and that is the intersection, not B, that is a B bar. अब स्टूडेंट P of A dash A बार इंटरसेक्शन B बार, राइट स्टूडेंट, आप सबको ये मालूम है कि नॉट को हम बार से या डैश से डिनोट करते हैं, बट ए इंटरसेक्शन A बार इंटरसेक्शन B बार की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, नॉट गिवन कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट और नॉट, लेकिन अगर हम P of A और P of B को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज अ 1 by 4 इंटू 1 by 2, दैट इज अ 1 by 8 इज इक्वल्स टू 1 by 8, राइट? P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू को इक्वल है, इसका मतलब A एंड B आर इंडिपेंडेंट और A and B are independent. This is a very very important note now, right? In page number 546 कि A and B are independent, that means A dash and B dash are also independent. A and B are independent, then A dash and B are independent. A and B are independent, that is A dash intersection B इंडिपेंडेंट. सो इसका मतलब दिस इज द क्लियर कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है. आपको चेक करके बताना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, लिख के बताओगे कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट. नाउ अप्लाई पी ऑफ ए बार इनटू पी ऑफ बी बार. बार से शो कर दो या डैश से, दैट इज द सेम मीनिंग, दिस इज नॉट. So now P of A dash, now what is the P of A dash? 1 minus P of A. And what is the P of B dash? That is the 1 minus P of B. And now is a P of A is given, that is a 1 by 4. P of B is given 1 by 2. And 1 minus 1 by 4 is a 3 by 4. 1 minus 1 by 2 is a 1 by 2. So that is a 3 by 8. This is answer. Now question number 10th is the P of A is given. Question number 10th, P of A is given 1 by 2. P of B is given 7 by 12 and P of not A or not B equals to 1 by 4. State whether A and B are independent. चेक करना है कि A and B are independent or not. अब स्टूडेंट प्रॉब्लम ये कि इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा, अपन को चेक करना है A और B इंडिपेंडेंट है कि नहीं, राइट? अब आपको सबसे पहली चीज़ हम आपको क्लियर करते हुए कि आपके सामने P of not A और not B गिवन है. Not A that means A dash, or that is the union, not B that is the B dash, equals to 1 by 4, राइट? चेक करना है तो इसका मतलब आपको P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसके बाद आपको चेक करना होगा कि P of A और P of B, P of A इंटू P of B की वैल्यू के इक्वल है कि नहीं. यू नो स्टूडेंट, P of A इंटू P of B, P of A is a 1 by 2 and P of B is a 7 by 12. That means is a 7 by 24. This is the P of A into P of B, राइट? दो इवेंट का प्रोडक्ट्स. बट इससे अगर मुझे फाइंड करना है कि मुझे यहाँ गिवन नहीं है, अब मैं ए डैश इंटरसेक्शन यूनिट की वैल्यू आपने 11th क्लास में एक डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा. डी मॉर्गन्स लॉ की P ऑफ ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश को ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिख सकते. दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ. एंड देन
1/4 एज इट इज, और नॉट की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1 minus 1/4, that is 3/4. P of A intersection B की वैल्यू 3/4 और P of A into P of B की वैल्यू 7/24. That means P of A, that means A and B are not independent. क्योंकि इंडिपेंडेंट तभी होता है जब P of A intersection B की वैल्यू किसके इक्वल आवे, P of A into P of B की. Question number 11 is again very easy. P of A is given, P of B given, A and B यानी कि intersection B find करना है, A O और B यानी A union B find करना है. So please solve question number 11. Sir. Now question number 12. A die is tossed thrice. एक डाई को हम 3 टाइम टॉस करते हैं. सबको मालूम है एक डाई को अगर 3 टाइम टॉस करते हैं, that is mean total possible outcomes is 216. A die is tossed 1 time, that is 6, 2 time, that is a 36, but now the 3 time, that means 216 case, 6 raised to power 3, 6 6 are 36, 36 6 are 216. अब प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वन. अब हम 216 केस तो बनाने नहीं बैठेंगे, तो ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे. स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 to 3 मैथड्स हैं, बट इट्स अ वेरी सिंपल मेथड जो हमारी बुक में दे रखा है. हमारी बुक के अंदर हमें ये मालूम है कि एक फॉर्मूला दे रखा है पी ऑफ ए यूनियन बी. हम जानते हैं कि पी ऑफ ए यूनियन बी कब लगता है, राइट, ए और बी में लगता है. एटलीस्ट ए एंड बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी दे रखा हो तो दैट मीन्स इज अ फॉर्मूला यूज ए यूनियन बी. अब ए यूनियन बी के 3 फॉर्मूला, वन इज द पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली mutually, and second is a not mutually, that is a P of A plus P of B. But now फर्स्ट फॉर्मूले को हम इस तरीके से ले सकते हैं. हमारी बुक में एग्जाम्पल नंबर 14 पे प्रूव किया हुआ है कि P of A यूनियन B का इज अ न्यू फार्मूला 1 माइनस P of A डैश into P of B डैश. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, राइट, P of A यूनियन B का, और जो उसी फॉर्मूले से आया P of A प्लस P of B माइनस P of A यूनियन B. लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई कब करते हैं, जब एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो. दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, राइट, एट लीस्ट वंस, राइट. दैट मीन्स P of A यूनियन A. अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास में P of A की प्रोबेबिलिटी एक सिंगल टाइम में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, दैट इज अ 1/2, एंड नॉट गेटिंग ऑड नंबर दैट इज 1 माइनस P of A, दैट इज अ 1 माइनस 1/2, दैट इज अ 1/2, राइट. सो स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है. अब प्रॉब्लम कि आपको P of A यूनियन B का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं सेम, 1 माइनस P of A dash into P of A dash into P of 3 times, that is now, right, 3 times, right. A die is tossed thrice, right, 3 times. So 1 minus 1/2 into 1/2 into 1/2, that is 1 minus 1/8, that is the 7/8. This is answer. Same question number 14. And question number 14, the probability of solving now specific problems independently, A and B. 2 पर्सन A और B और दोनों इंडिपेंडेंटली एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, राइट. A के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन 1/2 एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय B दैट इज 1/3. बोथ ट्राई टू प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. फर्स्ट पार्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व, दैट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व होगी, यानी कि या तो प्रॉब्लम ए ने सॉल्व कर दी और बी ने, और ए और बी का मतलब दैट इज ए यूनियन बी. और P of A यूनियन बी के देयर आर 2 फार्मूला, वन इज द P of A प्लस P of B माइनस P of A इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, और जो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती है दैट मीन्स इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो उस कंडीशन में P of A यूनियन बी का फॉर्मूला हम ये यूज कर लेते हैं, 1 माइनस P of A डैश into P of B dash. So that means
1 minus P of A dash is a 1 by 2 and P of B dash is, P of A is given. Now find P of A dash. 1 minus 1 by 2, that is again also 1 by 2. But now the P of B dash is a 1 minus 1 by 3, that is a 2 by 3. So P of A dash is a 1 by 2 and P of B dash is a 2 by 3. Then 2 to cancel. 1 minus 1 by 3, right, that is a 2 by 3 is answer. This is the first part, problem is solved. But now the second part is exactly one of them solved. Exactly one of them solve the problem. That means exactly one, या तो A करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व तो B नहीं करेगा, केस फर्स्ट, और केस सेकंड, देन A नहीं करता है तो B करेगा, और एग्जैक्टली वन, कोई एक प्रॉब्लम चलेगा तो A करेगा तो B नहीं करेगा, B करेगा तो A नहीं करेगा. दैट मीन्स देयर आर टू पॉसिबल केसेस, और जब केसेस बनते हैं तो दैट मीन्स इज अ प्लस का साइन. केसेस में हमेशा प्लस आता है, अदरवाइज दो इवेंट के बीच में ओ आर और है, दैट इज अ यूनियन. And now the A and B are, question me given, A and B are independent, then A, B dash are also independent, right? So P of A into P of B dash plus P of A dash into P of B. Then P of A is given 1 by 2, P of B dash is given 2 by 3, P of A dash is a 1 by 2, P of B is 1 by 3. So that is a 2 upon 6 plus 1 by 6, that is a 3 by 6, is a 1 by 2 is answer. So same question, question number 12 and 14 are very, very important question, but same method, same formula. Now question number 13, 2 balls are drawn at randomly with replacement from a box containing 10 black ball and 8 red ball. 10 black ball and 8 red ball, and total is 18 balls in a box, and find the probability both ball are red. Listen, both ball are red, both, that means intersection, right? First be red ball, second be red ball. Now look here, question number 13, then there are black ball are 10 and red ball are 8. Now find the first part is to find the probability of red ball, both are red ball in R1 intersection R2. Right? And question can go with replacement given है. First thing is R1 intersection R2, but now this question, this are independent or not, right? अब ये कैसे चेक करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं? विथ रिप्लेसमेंट है. विथ रिप्लेसमेंट का मतलब एक बॉल आने के बाद दूसरी निकाल ली. दैट मीन्स P of R1 intersection R2 equals to P of R1 into P of R2, right? P of R1 is 8 by red ball, first red ball is 8, but total is 18, in 8 by 18, and P of second is again with replacement, that is 8 by 18. So 2 4 ja, 2 9 ja, 2 4 ja, 2 9 ja, 4 ja 16 upon 9 9 ja 81. But now there are second part कि first ball is black and intersection and second ball is red. That means P of B into P of R. Probability of black ball is 10 by 18 and probability of red ball 8 by 18. Then 2 5s are 2 9s are 2 4s are 2 9s are, then 20 by 81. But now the third part, one of them is black or other is red. One of them is black, that means first black, second red, or first red, second red. There are two cases, that means P of BR plus P of RB. So probability of black ball into probability of red ball plus probability of red ball into probability of black ball. But आपके दिमाग में एक सिचुएशन आ जाएगी, सर ये independent है. So independent, that means with replacement. So please solve exercise 13.3. Thank you.